अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। और वेलकम बैक टू अनदर डे गेम प्ले वीडियो। और आज हम खेलने जा रहे हैं बहुत ही खून खराबे वाली गेम जिसका नाम है हिटमैन 3। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और चलते हैं गेम की स्क्रीन पर। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, Thornbridge Manor. चलो गाइस, अभी हम लोग अगले कॉन्ट्रैक्ट पर आ चुके हैं। अभी फिलहाल हम पहले डायना की बात पर गौर करते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। Younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law Okay. are all gathered to conduct Carlisle's sham funeral. Curiously, Carlisle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. ये क्या बना रखा है इतनी बड़ी हवेली। The target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। Nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. और इसी के साथ एजेंट 47 भी आ गया अपनी हार्ली डेविडसन लेकर। यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज की एक लेडी रहती है। उसने एक ऐसा अखबार में फेक फिनल करा था कि वो मर गई है। इसकी बात सुनते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlisle this morning. I'm curious why he's here. यहाँ से हमने अंदर जाना है। You should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlisle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, जो बंदा ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जो मिलने आया है वो लेडी से जिसको हमने मारना है। उस तक पहुंचने के लिए हमें पहले इन्वेस्टिगेटर को मारकर उसका रूप बदलना पड़ेगा। उसका नाम एलेक्सा है जिसको हमने मारना है। फिलहाल यहाँ पे तो एक बंदा घास काट रहा है। डायना ने हमें ये भी बताया था कि आज इनके घर में शायद किसी की डेथ हो गई है। यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो सारे हम पर शक करने वाले हैं और हमें रूप बदलना पड़ेगा इसका। और हमने इसका रूप बदल लिया है। Mr. Whitmer, thank God you're here. ये जो लेडी है ये हमें अंदर लेके जाएगी, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को। Yes, please. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madam's funeral and then she turns up alive. But then the awful business. हमने वो देखा है, वो रेड कलर का निशान आया था, इसका मतलब वो हमारा टारगेट वहाँ पर बैठा हुआ है। I've never seen the place guarded like ऊपर वाले फ्लोर में। And I dare say I don't like it at all. This is what I mean. You have to be patted down before you see Madame Carlisle inside. Oh, I could just cry. दोस्तों, हमारी चेकिंग होने वाली है इसलिए हमें हथियार फेंकने पड़ेंगे और हथियार हमें फेंकने ज़रूर पड़ेंगे ताकि हम पकड़े ना जाएं। हथियार फेंक देते हैं, इससे चाहिए ये। Sir, we're doing a stop and search here. Please comply if you need to get through. सीधा हम अंदर जाएंगे, हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। Won't take a second, sir. जाएंगे हम। वो नीचे तक चेक कर रहा है, बैच जो इतनी ज़्यादा चेकिंग कर रहा है ये तो। बड़वा इतनी ज़्यादा चेकिंग कर रहा है। तो गाइस, एजेंट 47 अंदर एंटर हो चुका है तो उसका टारगेट उसे मिलने वाला है। Thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen ये upon us, and I target है। need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my यही हमारा टारगेट है, experience, शायद जो a हमारे thorough सामने आके examination खड़ा हो of a गया। potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler.
Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Okay. Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. हमें इसके पीछे जाना है, इसको फॉलो करना है. I think Patrick is giving you I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. अभी ये उस बंदे के रूम पे लेके जा रहा है, ये जो लेडी है ना. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. ऐसा इसको दिखाना है कि हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. ओ भाईजान सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है, हर जगह गार्ड ही गार्ड खड़े हैं. And a suicide letter was found in his room. भाई इतने ज़्यादा रास्ते हैं. बंदा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा और क्या होगा. And will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you. So please do come and see me when you finish your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room. To my right. Mr. Zachary's room in my night. A locked room murder mystery 47. और इस रूम में हम I एंटर हो trust चुके you'll हैं. get to the bottom of this. नाइफ उठा लेते हैं. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be. और यहाँ पे नोट रखा हुआ है, एक सुसाइड नोट, ताकि ऐसे जाहिर हो के सुसाइड हुई है. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Why don't you use your camera to scan the dead body? यहाँ पर एक बंदे की लाश पड़ी हुई है जो मर गया, मतलब जिसने सुसाइड कर ली है. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread. इसमें एक लैपटॉप था जहाँ पर हमने लास्ट टाइम चेक करा था कि इन्होंने शॉपिंग करने के लिए वेबसाइट खोल रखी थी. अभी हम चेक कर लेते हैं और कुछ यहाँ पे कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कल्टी मारते हैं यहाँ से फिर. यहाँ पे हम देख ही रहे हैं, कुछ हमें मिल जाए शायद. भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली हवेली है ये. तो ये क्या है, कोई गेट खुल गया भाई, भूल भुलैया वाला गेट भी खुल गया. This could explain how the door was locked from the inside. ये एक सुराग है जहाँ से हम देख रहे हैं कि इधर हो क्या रहा है. सारे सीक्रेट रास्ते हमें पता लग चुके हैं. और ये मिरर है. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge. ये भी एक दरवाजा है जो हमने खोल लिया है. I ये भी believe खुफिया एक you've done a दरवाजा है. thorough search of the crime scene 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Mr. Fernsby, I'm done with the crime. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death.
Here's the material that I've prepared for you. ये It's इससे a list एजेंट of the 47 possible इससे सवाल suspects जवाब and their पूछ रहा है कि quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. This is very useful information, 47. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you सीधा ask जा the रहे हैं suspects for alibis? उसको Or क्या perhaps you prefer सस्पेक्ट searching the manor for एलिबिल clues के first? पास क्लूज हमें क्लूज ढूंढने हैं सबसे पहले ये हमें इंटेल इस पे मिल चुका है हमारा ऑब्जेक्टिव ये है The garden would do you good. I said speed up time, not my passing. Now just go away, will you? Of course, sir. I'll come back later. How very kind of you, dear Mr. Fernsby. I hoped... you are invading my How's personal everything coming space. along, Elaine? So, Very well, Mr. Fernsby. Make sure you focus on your work. Patrick Don't Carlyle. leave one more maid crying Can you tell in the me kitchen. where you were So watch yesterday yourself evening? around, young Mr. Patrick. shit, Don't worry it's about that me. sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, is that it? Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. अभी इंटेल मिल चुका है ये वॉशरूम है Pacing, for God's sake, Emma. But why don't we get any kind of explanation? It's bloody rude, that's what it is. Making एक और इंटेल हमें मिला है ये funeral and then Can you show tell up me like about nothing's so yesterday easy. evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I'm telling you, I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. अभी तक एजेंट I swear 47 उसकी Gregory एक्टिंग enjoys ड्रामे Edward's उसके discomfort पूरे over नहीं staying हो रहे here. क्या नाम है I वो had a conference call with my New उसके York office डिटेक्टिव at के ड्रामे 9, पूरे नहीं हो रहे so एजेंट I 47 spent बड़ा बड़ा 3 hours ड्रामा on my है laptop in my room. लेकिन एजेंट 47 and काम went बहुत अच्छा straight to करता bed है afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward.
He can only take so much. Is there anything else you want to ask me? चलो दोस्तों, अब हमें केस फाइल लेनी पड़ेगी जो कि हमें मिल चुकी है। यहाँ पे ही है, करीब ही है, शायद इसके पास है केस फाइल। इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बंदा आ गया है। इसमें तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। केस फाइल की तो समझ नहीं आ रही, केस फाइल कहाँ पे है। क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। It's got real soul. First time here? Yep. Yeah, it's impressive, all right. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. यहाँ पे कोई तस्वीर है, इसके पीछे लग रहा है कुछ है। ओ भाई ये क्या है? सोफे के अंदर कोई बटन था। ये पासकोड डालना है हमने, और ऊपर हिंट दी हुई है कि पासवर्ड एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे टाइस्कोप में है, एक पियानो में है। एलेक्सा तो अभी मीटिंग कर रही है वहाँ बैठ के। ये 7 एक मिला है हमें पासकोड, एक इसमें है। कहाँ पर है? टेलीस्कोप हमें मिल चुका है, और यहाँ पे एक पासकोड लिखा होगा जो हमने देखना है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? और हम ये सारे पासकोड यहाँ पे ऐड कर देंगे। खुल गया। केस फाइल हमने ले ली है, केस फाइल अपने हाथ में आ गई। अब हमने मेन टारगेट हमें एलेक्सा को मारना है। सबसे पहले एजेंट 47 एलेक्सा को मारना है। एलेक्सा की खैर नहीं है, एलेक्सा की बारी आ गई है। वो इसको शक पड़ गया भाई, भागो भागो भागो, शक पड़ गया भाई। शक नहीं पड़वाना अपने ऊपर, सीधा कत्ल करना है, जाके कत्ल करके आ जाना। एजेंट 47 का काम है, वो अच्छी तरह जानता है उसने कैसे करना है। Greetings, sir. ये तो भाई एक महल टाइप बना हुआ है, हवेली टाइप बना हुआ है कुछ। Financial decisions revoked and a freeze on Rebecca. And then you give me that token for the vault. यही है एलेक्सा जिसको हमने मारना है। Only one of two. You need to explain. The token for the bank vault is just a contingency measure. I doubt you'll need it. Christ, mother, that's exactly. यहाँ पे तो मार नहीं सकते। Could you be more cryptic? I am working very hard to figure everything out. I need you to back off and trust that I'm in control. I have contingency plans and will make sure that you get information, useful, factual information when I have it. But for now, I need time to focus. Business as usual then. You are cold, mother. And alone. By choice. अब हमने मौका देख के इसको मार देना है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, इसको मार देना हमने। Rebecca? Yes. बंदा है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। She kept asking all kinds of questions. पहले तो इसको भड़काना पड़ेगा लगता है that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler. Of course.
I'm afraid. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. You've got to be kidding me. No power, no portrait. Oh, Madame Carlyle will be furious. So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the अब portrait मैं would be फोटोग्राफर का one for रोल the अदा करना ages. पड़ेगा She expects the फोटोग्राफर family को photos to be मारकर done any उसका moment सारा now. I need this उतार के shoot खुद to पहनने happen, पड़ेंगे okay? And I ताकि need हम it to एलेक्सा be तक आराम से perfect. पहुंच सकें Can't we just take a fuse from another fuse box? I guess we could do that. जहर हमने पकड़ लिया अब जहर का इसमें डाल देते हैं और ये फोटोग्राफर के पीछे जाना पड़ेगा हमें ताकि इस फोटोग्राफर को मारकर इसका रोल अदा करें हम यहाँ पे गार्ड को पहले चकावा देना पड़ेगा गार्ड ने ऐसे तो बात आना नहीं This seriously needs to step into this century. It's not safe at all. If this was back home, it would be a lawsuit waiting to happen. Frank is busting our balls out here too. दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि आप नई आने वाली गेमिंग वीडियो देख सकें ओह चल भी तेरी खैर नहीं आया थले चल इसका तो काम तमाम कर दिया इसको नुकड़े लगाना पड़ेगा नुकड़े लगा दिया फोटोग्राफर की बारी वही फोटोग्राफर का भी काम तमाम हो चुका है ज़ाहिर से इसको न्याड़े लगा दिए Greatness. अब एलेक्सा को ढूंढना है यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं यहाँ पे हमने ऑन कर दिया Oh, sounds like the power's back up. Why don't you take a picture to test it? It works. I'm ready for the shoot. Perfect. I'll call the family down now then. Excellent, 47. Madame Carlyle is on her way down for the family photo shoot. Let's see if any memorable moments will play out in front of the camera. वहाँ पर है हमारा टारगेट जल्दी से उसको हम ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पे लाना पड़ेगा ताकि हम उसे आराम से एलिमिनेट कर सकें Right ahead, please. वो तो खुद ही आ रहा है हमारे पास हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तो अच्छी बात है वो खुद ही टारगेट हमारे पास आ रहा है और दोस्तों इसे इस तरह कत्ल करेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कत्ल कैसे हुई है ये I expect you to be ये efficient. हादसाती मौत मर I जाएगी have a lot to see to today. I'll do I my wonder if best. he does headshots. That's what she does. Create precise order in all her affairs, never letting coincidence touch her. Down by the fountain. दोस्तों जैसे ही अब ये वहाँ पर जाकर बैठेगी तो हम पीछे से करंट ऑन कर देंगे और पानी ऑन कर देंगे ये करंट से चलने के मर जाएगी ये हमारा मिशन है जो हम इसे हादसाती मौत मारना चाहते हैं किसी को खानो कान खबर भी ना होगी एजेंट 47 ने की है एजेंट 47 हमेशा ऐसे ही करता है
चलो अब जल्दी से जाके ये बैठ जाएगी वहाँ पे, फिर हमारा काम शुरू होगा, फिर हम दिखाएंगे इसे कि हम क्या हैं। चलो अभी यहाँ पे खड़े ही होना है कि बैठना भी है, जल्दी जाओ। Chin up, Edward. No one wants to look at that long face. You're such an idiot, Gregory. I'm fine, Rebecca. पहला फोटोशूट तो हम आराम से करेंगे ना, पहले फोटोशूट में तो कुछ नहीं होगा। Well, Mother, you certainly know how to lighten the mood. Could we have one more? We're having such a jolly good time, aren't we? Just take the picture. We don't have all day. पहले हमने ये गार्ड को चुकावा देना है, कुछ फेंक के इसको ध्यान लगाना है। वो भाई ध्यान लग चुका है, अब हम अपना काम करेंगे। यहाँ से मैं पानी का पाइप खोलना है पीछे से। Could we have one more? We're having such a jolly good time, aren't we? There's a puddle of water here. Well, never mind. Let's just get this done, shall we? अब हमारी बारी आ चुकी है, ये करंट से जलने वाली है और हम इसका करंट वाला फोटोशूट करने वाले हैं। ये करंट वाला फोटोशूट हो चुका है। एलेक्सा बहुत बुरी तरह वो मर जाएगी, ये मर गई है और हमारा मिशन पूरा हो गया है। तो ये है जो एजेंट 47 मर भी गई और किसी को पता भी ना चला कि हमने मारी है। वेरी वेल डन। अब हमने सीधा एग्जिट पे जाना है, एग्जिट लोकेट करनी है। हमारा मिशन पूरा हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये वाला मिशन खेलने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आप नई आने वाली वीडियोस को देख सकें, गेमिंग वीडियोस को। अभी ये वाला मिशन कंप्लीट हो गया है और एजेंट 47 जाने वाला है। तो दोस्तों फिर अगली गेम प्ले में मुलाकात होती है हमारी। अभी तक के लिए इतना ही। ओके, खुदा हाफिज़। 47, they're everywhere. Go, get out! It's the Constantine. Shit!